So we are continuing today with cell and next हम आ जाते हैं. We had completed prokaryotic cell last time. Today we will start with eukaryotic cell. Next is eukaryotic cell. So eukaryotic cell means इसके main features क्या है? That is true nucleus present. एक तो true nucleus है. Second है membrane organelles present. है ना, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum. These membraned organelles are present. Therefore, have हम क्या बात करेंगे? Compartmentalization. They show compartmentalization. और ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था. मैं जल्दी से दोबारा से बता देती हूँ कि प्लांट सेल, आप मुझे साथ साथ बताते चलो. आउटर मोस्ट इज सेल वॉल, जल्दी से बताते चलो. एंड इनर टू सेल वॉल इज प्रेजेंट अनदर कंपार्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट. And this protoplast, its outer layer is plasma membrane and inner to is present protoplasm. Protoplasm has nucleus, vacuole and cytoplasm. And cytoplasm has मैट्रिक्स, जो लिक्विड पार्ट है सेल का, और साथ में ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल. ये हमने कंपार्टमेंट्स किए थे. तो यूकैरियोटिक सेल में देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन, क्या फंक्शन है? व्हिच हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर and separates cell from extracellular matrix. So this is eukaryotic cell. ये पहले लिख लो फटाफट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अगर हम सेल का स्ट्रक्चर बनाए तो प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाए तो दिस इज ये जो है बेटा, दिस इज सेल वॉल. सबसे बाहर आ जाती है बच्चे सेल वॉल. उसके बाद इनर टू सेल वॉल इज प्रेजेंट, बिल्कुल इसके साथ स्टैग्ड है. यहाँ पे बेटा कोई स्पेस नहीं होती है, ये तो हम दिखा रहे हैं स्पेस ताकि डिस्टिंक्ट हो जाए. अदरवाइज
This is plasma membrane. Then most of the space of the plant cell wall, अगर आप देखेंगे, it is occupied by a large step vacuole. Then there is another structure this is endoplasmic reticulum. ये है न्यूक्लियस, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है and it has several pores. It has several pores called as nuclear pores. Then this is matrix. Nucleus के अंदर there are thread-like structures, many called as chromosomes, and there is also present an amorphous structure called as nucleolus. दिख रहा है ये डार्क कलर का, इसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं है. This is nucleolus. Then double membrane. This is chloroplast. These are chloroplast. थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपको. ये chloroplast है. Then there are present here this is mitochondria. क्लोरोप्लास्ट कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही है. There can be free endoplasmic reticulum. Dictyosome. This is dictyosome. Ribosomes. This is rough endoplasmic reticulum. जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है. ये भी रफ ही होती है. This is smooth endoplasmic reticulum.
ये mRNA के साथ कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड है, पॉलीसोम। These are polysomes. ठीक है जी। इन केस ऑफ बनाओ फटाफट से। यहाँ पे एक छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। peroxisomes. These are peroxisomes. आपकी बुक में प्लांट सेल में भी लाइसोसोम्स दिखाए हैं, जबकि लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं होते। ये याद रखना है, ये गलत दिया हुआ है आपकी बुक में। So this is cell wall, plasma membrane, chloroplast, polyribosome, nucleolus, chromosomes, nuclear membrane, nuclear pore, endoplasmic reticulum, ये है RER, this is SCR, this is सिंगल सिंगल है, गोल्जी अपरेटस नहीं होता है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं डिप्टियोसोम या गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, ये है साइटोप्लाज्म। This is the structure of plants. So let's talk about cell wall. So first, we will talk about cell wall. तो बेटा ये किस में होती है? यूकैरियोट्स में it is present in fungi and it is present in plants. यूकैरियोट्स में फंजाई आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बट इट इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट्स। फंजाई में सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ फंगल सेल्यूलोज। लिखो जरा जल्दी से। इट इज formed of
फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, और ये बेटा फंगल सेल्यूलोज क्या है, और हम क्या कहेंगे, इट इज काइटिन। ब्रैकेट में लिख लो पॉलीमर ऑफ नाग। हाँ जी, कौन बताएगा, शिवांशी नाग की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। शिवांशी, नाग की फुल फॉर्म NAG की। नो मैम, नहीं जानती। नहीं याद है। हाँ जी गुंजन, आप बताइए बेटा। डू यू रिमेम्बर, हमने प्रोकैरियोट्स में भी किया था। किसको याद है, चलो वो बताए, कृषा, सरगम, शिवांशी, अतिभा, किसको याद है। हमने प्रोकैरियोट्स में किया था बैक्टीरिया में म्यूरिन, पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम, मैंने बताया था आपको। यस, एनीबडी। हाँ जी अतिभा, आप बताओ। मैम NST लाइक ऐसे था कुछ, अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, पॉलीमर ऑफ नाग। एन एसिटाइल glucosamine, it is a polymer of NAG, NAG, that is N-acetyl glucosamine। ठीक है, और प्लांट्स में बेटा, प्लांट्स में क्या क्या आ जाता है, ऊपर करके लिख लो। प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, मॉसस, अभी तक आप, हम आगे चल के बताएंगे ब्रायोफाइट्स, बट अभी लिख लो मॉसस, फर्न्स, FERNS, फर्न्स, pines, 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 and flowering plants। तो यहां पे एक आ जाएगा बेटा एल्गी, और फिर अदर प्लांट्स। जो अदर प्लांट्स है बेटा, सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक, सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक। एल्गी में it is formed of मेनन्स, गलेक्टन्स, ये सब बेटा कंपाउंड्स है, बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे, अभी याद ही रखना है आपने। इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनन्स, गलेक्टन्स, सेल्यूलोस, इसमें भी सेल्यूलोस तो है ही है, सेल्यूलोस एंड मिनरल्स such as कैल्शियम कार्बोनेट। फंजाई में cell wall is formed of chitin which is a polymer of NAG। प्लांट्स में algal cell wall consists of mannans, galactans, cellulose and minerals such as calcium carbonate। और अदर प्लांट्स में mannans, galactans नहीं है, it is mainly cellulose। और हमने यही वाली बात करनी है, अदर प्लांट्स में जो सेल वॉल है उसका हमने स्ट्रक्चर करना है। तो पहले आ जाइए बेटा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल पहले ये याद रखना है, ये लिविंग नहीं है, इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज नॉन लिविंग rigid structure which gives shape to the plant cell, which gives shape to the plant and fungal cells। Second है, it protects the plant, it protects the plant and fungal cells, it protects the rigid है ना,
It protects the plant and fungal cells from mechanical stresses या mechanical damage, from mechanical damage and various infections. ब्रैकेट में लिख लो प्रोटेक्टिव. तो सेल वॉल का क्या है? स्ट्रक्चरल है. दूसरा है प्रोटेक्टिव रोल. नेक्स्ट आ जाता है द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल. The outermost layer of cell wall called as middle lamella, M-I-D-D-L-E, middle lamella, L-A-M-E-L-A, lamella, acts as cementing material, and joins the adjacent cells. तो अब हम देखते हैं बेटा लेयर्स ऑफ. अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखे, फिर ये लिखना. सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ी है, अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है जी. तो लेयर्स ऑफ सेल वॉल, तो कौन कौन सी लेयर्स है? आउटर मोस्ट मिडल लैमेला, सबसे बाहर सेल के मिडल लैमेला. वो दो सेल्स का कॉमन हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट लेयर of cell wall to be secreted around newly formed cell. जब सेल नया डिवीजन हुई तो जो नया सेल बना उसमें सबसे पहले क्या सिक्रीट होता है? मिडल लैमेला. अनदर इज किस चीज का बना है? फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स. ये याद ही रखना है. पैक्टेट्स क्या है ये आई विल टेल यू. ठीक है. तो ये याद ही रखना है. फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. एक्ट एज cementing material between adjacent cells. Act as cementing material between adjacent cells. इसलिए जो सरफेस पे सेल्स है तो उनके आउटर साइड पे मिडल लैमेला नहीं होती. Therefore is absent on the outer surface of outer side. आप कह सकते हो outer side of surface cells, क्योंकि उन्होंने किसी से जुड़ना तो है नहीं, ऊपर वाली लेयर है, तो इसलिए वहां पे मिडल लैमेला की जरूरत ही नहीं. ठीक है. अनदर इज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. Middle lamella gets digested and this results in softening. बेटा जब कच्चा आम है ना, आजकल हम देखते हैं कितना हार्ड होता है एकदम, और जो पका हुआ आम बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनके बीच का सीमेंट डिसॉल्व हो गया, सेल्स लूज हो गए, और जब सेल्स लूज हो गए तो वो जो है वो सॉफ्ट हो गए. तो राइपनिंग इज मेनली, हम कहते हैं सॉफ्टनिंग, नॉट राइपनिंग, बट
हम कहेंगे softening of fruits during ripening is due to dissolution of middle lamella. करो जरा ये लिखो. तो अगर हम दो adjacent cells बनाते हैं बेटा, ये दो adjacent cells हैं, तो इनके बीच में this is middle lamella. ये सारी बाहर जो है ये ब्लैक वाली, दिस इज मिडल लैमेला. ठीक है, तो ये बाहर मिडल लैमेला है. देन इनर टू मिडल लैमेला इज प्रेजेंट. ये मैं थोड़ी सी आपको डिस्टिंक्ट करके दिखा रही हूँ. दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. तो अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देखें तो हमें ये है मिडल लैमेला. इनर टू मिडल लैमेला ये दो सेल्स है अलग अलग. आप देखो ये अलग ये अलग. तो ये प्राइमरी सेल. नेक्स्ट आ जाइए प्राइमरी सेल वॉल. सेकेंड पार्ट है प्राइमरी सेल वॉल. It is thin, formed inner to middle lamella. It is formed inner to middle lamella. It is cellulosic. हम इसको कहते हैं cellulosic. हम कह देते हैं it is cellulosic. It has matrix in which cellulose microfibrils are embedded. It has matrix in which cellulose microfibrils, ये है matrix which is formed of pectins, hemicellulose. It is matrix जो है it is formed of pectins, hemicellulose, water and glycoproteins. Glycoproteins means proteins joined with carbohydrates. Glyco means carbohydrates. So this is matrix and this is bundle of cellulose microfibrils. It
is bundle of cellulose microfibrils. बनाओ फटाफट से. ठीक है. It is flexible, secreted in young cells, जरूरी तो नहीं है बट may diminish जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी. may diminish in thick walled mature cells. But may diminish in thick walled mature cells. ठीक है जी. But diminish in thick walled mature cells. Is it okay? This is about primary cell wall. Next हम आ जाते हैं बेटा इसके अंदर ही then this is अगर हम इसके अंदर देखें this is secondary cell wall. नेक्स्ट थर्ड टाइप की लेयर आ जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल. इट इज फॉर्म्ड in some mature cells when they have stopped growth. For example, tracheids, vessels, fibers, etc. It makes the cell wall thick. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बेटा इसी में सेकेंडरी सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं. कॉम्पोजिशन वही है. कॉम्पोजिशन वही मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ वाटर. उसी तरह से जैसे ये है हेमीसेल्यूलोज देन पेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन. मैट्रिक्स एंड सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल. It's same ही है but it is secreted inner to the primary cell wall. But certain cells have deposition of other different type of substances
देखो सेकेंडरी सेल वॉल तो सब में है, बट ये डेपोजिशन कुछ कुछ में होती है, such as deposition of some specialized substances such as lignin. दोबारा से बोल रही हूँ, सरगम आ जाए जरा। सरगम आप भी लिख लो बेटा। The composition of secondary cell wall is similar to primary cell wall, but in certain cells it has deposition of different substances. For example, first है lignin. The cells having deposition of lignin are called as lignified cells. The cells whose cell wall has deposition of lignin are called as lignified cells. It reduces the water content of the cell wall. Lignin क्या करता है? Reduces the water content of the cell wall matrix. Thus increases the hardness. It is present in the cell wall of sclerenchyma. Second आ जाता है सुब्रिन. It is a waxy substance. It is a waxy substance which makes cell wall impermeable to water. And cells having subrin are called. मैं ये repeat करना. It makes cell wall impermeable to water. ठीक है जी. The cells having deposition of subrin are called as subrized cells. Cells having deposition of subrin are called as subrized cells. For example, cork cells, अभी हम करेंगे एनाटॉमी में, and endodermal cells. Cork cells and एंडोडर्मल सेल, ये प्लांट्स में ही होते हैं. अगेन जब एनाटॉमी करेंगे तो हम आपको बताएंगे ये क्या है. ठीक है जी. तो सेकेंडरी सेल वॉल इज सिक्रीटेड इन सेवरल लेयर्स. ये एक लेयर नहीं होती है, कई लेयर्स होती है. द सेकेंडरी सेल वॉल इज सिक्रीटेड इन सेवरल लेयर्स. And the innermost layer is also called as tertiary layer. Innermost layer is called as tertiary layer. ठीक है जी. So this is about cell wall.
पर बेटा अब सुब्राइज्ड सेल्स हो गए, अगर सुब्रिन की थिकनिंग है, इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, तो इस तरह सेकेंडरी सेल वॉल इम्पर्मिएबल हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए सेल्स में टू मेंटेन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस देयर आर प्रेजेंट पिट्स। नेक्स्ट आ जाइए, पिट्स। Cells having secondary cell wall are thick wall and it provides impermeability. And हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है और इम्पर्मिएबिलिटी। इसलिए therefore, पहले ध्यान से समझो, therefore exchange of substances may occur by exchange of substances between cells। जो पास पास में सेल्स पड़े हैं उनमें कैसे होंगे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस? में अकर बाय दो तरीके हैं, एक है पिट्स से, एक है प्लाज्मोडेस्मेट। तो अब यहाँ पे ध्यान से डायग्राम देखना, दोनों में फर्क देखना। ये दो एडजेसेंट सेल्स है। यहाँ मिडल लेमेला तो होना ही होना है सब जगह, और इसके अंदर बेटा ये सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। थिक वॉल प्रेजेंट है। बेटे सेकेंडरी सेल वॉल जरूरी नहीं कि सब में हो, कुछ जगह पर इसको मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देती हूँ, थोड़ा सा ही रीजन हम दिखाते हैं। दिस इज मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, और अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज सेकेंडरी सेल, और ये जो बीच का एरिया है दिस इज कॉल्ड एज पिट। ये जो है इसको हम कहते हैं पिट। अब यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्म विड्थ है इसकी, इसलिए हमने इसको कह दिया सिंपल पिट। पहले ध्यान से सुनो, नहीं तो रह जाएगा, समझ में नहीं आएगी। अपने पेन नीचे रख लो। एक और देखो, जल्दी मत करो, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन।
फिर मिडल लेमिना, फिर प्राइमरी सेल वॉल, और फिर जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, वो इस तरह से लटक रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेटा, दिस इज पिट एरिया, ये सेकेंडरी सेल वॉल। जो विड्थ ऑफ पिट है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, वाइडेस्ट इन द सेंटर, नैरो एट द पेरिफेरी। इनको हम कहते हैं बेटा बॉर्डर्ड पिट्स। अब बेटा, अब एक और चीज, ये दो सेल्स है, ये सारी क्या है, दिस इज सेल वॉल। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिक वॉल नहीं, ये थिन वॉल्ड सेल्स में भी हो सकता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये पूरी है, इसका कुछ नहीं हुआ, ये तो है ही है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, दिस इज ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अगेन ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे टॉपिक आपने लिखना है पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर हम इसको, इस वाले रीजन को थोड़ा सा अगर हम डिटेल्ड बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पहले ये लिख लो, राइट ऑन दिस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। This is the magnified structure of plasmodesmata. बनाओ फटाफट से, या पहले थोड़ा सा लिख लो, पहले बनाओ फिर हम लिखते हैं। ड्रॉ इट। यस मैम। देख लेना जरा कि दोबारा से मैं बता रही हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is traversed by endoplasmic reticulum called as desmotubule. It has protein channels on both sides which helps in transport of substances from one cell to another cell, from one cell to another cell. ठीक है? And plasmodesmata are the characteristic feature of plant cells. It is the characteristic feature of plant cells. Next are the pits. Pits are present in thick-walled cells. Pits are
present in thick walled cells. Next point. These are the regions where secondary cell wall is absent. Where secondary cell wall is absent. But primary cell wall and middle lamella present. Primary cell wall and middle lamella present. Next point है, if the pit has uniform diameter, if the pit has uniform diameter, it is called as simple pit. It is called as simple pit. If the pit has maximum diameter in the center, if the pit has maximum diameter in the center and minimum at the periphery, and minimum at the periphery, it is called as bordered pit. Bordered pit. Minimum diameter At the periphery, yeah, on the sides. On the sides. Right? So this is all about cell wall. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. तो हमने क्या बताया बेटा, जो सेल वॉल है इट इज नॉन लिविंग, रिजिड, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज लिविंग एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन या plasma membrane. It is living and it is flexible. It is present in all the cells, all the living cells, whether prokaryotic, eukaryotic, plant and animal cells. It is present in all the cells without exception. मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं तो इसका मतलब वो सेल ही नहीं है. ठीक है. अगर हम पहले अब स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में बनाया था वैसे ही है बेटा. बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ये देखो अभी तो हमने एक ही लेयर बना रहे हैं. This is phospholipid. This is bilayer of phospholipids. Phospholipids, ध्यान से मेरी बात सुनो. लिपिड में क्या है बेटा? E. एक फॉस्फोरिक एसिड है और इसके साथ लिपिड पार्ट है. जो फॉस्फोरिक एसिड है बेटा ये हाइड्रोफिलिक है. फिलिक मतलब लव, अट्रैक्ट्स वाटर, इट बाइंड्स विद वाटर. ये है हाइड्रोफोबिक, इट रिपेल्स वाटर. ये पानी से डरता है. ठीक है. अब पानी से डरेगा, अब जब सेल में तो पानी है, तो जब ये फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ये टेल वाला पार्ट है बेटा, है ना, ये क्या करते हैं, ये अंदर को छुप जाते हैं. अब ये छुपे कैसे, अपने आप को पानी से कैसे बचाएं, तो ये क्या करते हैं,
ये आपस में 2 लेयर्स बना लेते हैं और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं ताकि इन्हें वाटर से कोई लेना देना ना हो। और हाइड्रोफिलिक, ये जो फॉस्फोरिक एसिड वाला पार्ट है, ये कहता कोई बात नहीं, मैं पानी से भी दोस्ती कर लूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफोबिक, ये ऐसे ही 2 बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद then it is there are also present proteins. Extrinsic proteins, peripheral proteins. These are intrinsic proteins. ये है intrinsic protein. ये जो प्रोटीन्स है इनके साथ हो सकता है इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड, फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से यहां से भी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो सकते हैं। फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन्स। वो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो पूरी इसमें एक्सटेंड करते हैं, इनको हम बोलते हैं टनल प्रोटीन्स। है तो ये इंटेग्रल ही है, बट दे आर टनल प्रोटीन्स। दीज आर extrinsic proteins. These are carbohydrates. और कहीं कहीं पे बेटा यहाँ पे या इधर भी there is present cholesterol. This is the structure of plasma membrane. बनाओ, जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होंगे वो यहाँ पर भी होंगे, बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। These are also integral proteins. They may be present on both the sides, but not carbohydrates. Present only on. ये है. This surface is called as cytosolic site. साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, और ये है एक्सटर्नल साइट। ठीक है बेटा, तो दिस इज फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू फर्स्ट द असाइनमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसने नहीं की वो करके आओ, ठीक है, और जिसने कर ली वो लेके आना, ठीक है, और वो करेंगे। और फिर हम ये सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगली बार, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रक्चर करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे और इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगली बार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर एक्सटेंड होगी तो हम अगली बार एक्सटेंड करेंगे क्लास, इसलिए खा पी के बैठना बेटा, ये ना 7 बजे तक तुम्हें भूख लगनी शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, कई जगह काम आएगा। ओके, ठीक है जी, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. वेलकम Thank you, ma'am. वेलकम।